Everyone, good evening and welcome to Aptitude Club. So today we'll be discussing CAT 2022 slot 1 QA questions. Now total we had 22 questions in this slot, and I'll be taking you through these 22 questions, proper explanations and the concept behind that through three videos. Okay, I'll not explain everything in one video, so I'll break it into three parts and I'll explain you in three videos. So this is the first part of CAT 2022 slot 1. Accordingly, I'll take slot 2, slot 3 and all the rest previous years as well. And if you're new to my channel Aptitude Club and you like the content, do subscribe and watch the other videos. I have also done like a LRDI series and I'll continue videos on that LRDI series as well. So do watch the rest of the videos, and if you like the sessions, do like, share with your friends and subscribe to the Aptitude Club channel. So today's session will be on QA questions from CAT 2022 slot 1. So let's begin with our session today. First question. Now kind of coordinate geometry and geometry mixed. Predominantly ये coordinate geometry का ही question है. Let ABCD be a parallelogram such that the coordinates of its three vertices A, B, C are. So मान लो this is A, this is B, this is C and this is D. So coordinate of the vertices, A का coordinate is given as 1, 1, B's coordinates are 3 and 4, C का coordinates are -2 and 8. We'll have to find the coordinates of vertex D. So let us say vertex D का coordinates are X and Y. Okay. So how to find? There are two ways to look at it. We can use distance formula and we can calculate using distance formula. Method 1, you can use distance formula because that would be something everyone would know. Distance formula में just equate this. AD is equal to BC. Opposite sides are equal. So you can calculate AD and BC. AD का exact value तो नहीं आएगा, वो X and Y के terms पे रहेगा. But BC का exact value आएगा. So from the options, okay, from the options you can use what value is satisfying that particular equation. That is using distance formula. That means basically ये करेंगे. Distance formula में AD is how much? X minus 1 whole square plus Y minus 1 whole square is same as -2 minus 3 whole square plus 8 minus 4 whole square. So this is like 25 plus 16, 41. So from the options you check X minus 1 whole square plus Y minus 1 whole square is equal to 41. यहाँ पे use options. Which values of X and Y will satisfy? You'll see that if I put X is equal to -4 and Y is equal to 5, it perfectly satisfies. So option 1 should be my answer. Because -4 minus 1 minus 5 का square 25 हो जाएगा and 5 minus 1 4 का square 16 हो जाएगा. So you'll easily get the answer. Very easy question this one. When I say question was from coordinate geometry, it doesn't necessarily mean you have to be an expert in coordinate geometry. Basics, just the basics. Distance formula में यहाँ पे we can solve this. There is another way to do it also. That is using method 2. I'll use slope. Okay. Slope of BC is same as slope of AD. BC and AD का slope are same because those two lines are parallel. If lines are parallel, then their slopes are equal. So we can use that concept here. So what is slope of BC? BC का slope कितना आएगा? Slope का general formula, let me write it here. Slope is basically y2 minus y1 by x2 minus x1. बस वही चीज यहाँ पे use करेंगे. y2 minus y1, 8 minus 4 by x2 minus x1 minus 2 minus 3. This is equal to y2 minus y1, y minus 1 by x minus 1. बस अभी इसे solve करना है. So this basically becomes minus 4 by 5 is equal to y minus 1 by x minus 1. Or just multiply this, you will minus 4x plus 4 is equal to 5y minus 5. Or you get 4x plus 5y is basically 9. And again here use options. यहाँ पे भी तुम options use कर सकते हो. Like which of the options? तो यहाँ पे again if you put x is equal to -4, 4 into -4 -16, and if I put y is equal to 5, 5 into 5 25, -16 plus 25, again you get 9. So either ways, whichever way is easier for you, you can try that.
एंड बिकॉज ऑप्शंस आर ऑलरेडी गिवन, वर्टेक्स डी क्या होगा पूछ रहा है एंड डायरेक्टली ऑप्शंस में दे भी दिया है क्या होगा, तो आई कैन जस्ट पुट द ऑप्शंस एंड इजीली सॉल्व। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, स्लोप यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज, तुम डायगोनल्स में डिस्टेंस फार्मूला इक्वेट कर सकते हो, डायगोनल्स तो वैसे भी कर सकते हो, विच एवर वे सूट्स यू, ठीक है। So this was again a question that you should have solved in the exam. You should have solved if you know the basics, only the basics of coordinate geometry. That is why I'll recommend those of you who would be preparing for CAT 2023, do not skip any chapter. If you really want to score high in the exam, take this seriously. I am talking this out of experience. You need to read all chapters. I'm not asking you to be expert, but you should know the basics of all chapters. Now, it doesn't take a lot of efforts to know the like basics of each chapter. If you want expertise in any chapter, you will have to practice a lot of variety of questions, and you have to go into the depth. But then, just to know the basics, that's a bare minimum we are expected to do while we are preparing, especially for an exam like CAT. ठीक है, जितना इजी हो सकता है उतना डिफिकल्ट भी हो सकता है if you skip chapters. Okay, let us see this one again. A very easy question. I'll categorize this as a very easy question if you have read distribution theory. Basically बोल रहा है there are 20 identical balloons. Okay, 20 identical balloons, and these balloons have to be distributed between 4 children such that each child gets some balloons. That means किसी को 0 balloons नहीं मिल रहा है, but no child gets an odd number of balloons. This means even number of balloons मिल रहा है सबको. Every child gets an even number of balloons. So what I'll do is, let us say the balloons that they receive is 2A, 2B, 2C and 2D, so that I can make sure that they have got even. 2A is definitely even irrespective of the value of A. So 2A plus 2B plus 2C plus 2D is equal to the total number of balloons, which is 20, which gives me A plus B plus C plus D is equal to 10, and I have to say that A, B, C, D are natural numbers because none of them can be 0, because every child receives at least one balloon. बोल रहा है ना, each child gets some balloons, that means no child gets 0 balloons. तो ये अभी एक direct formula आ गया distribution theory का, very commonly used. If A, B, C, D are natural numbers, so basically I'll have to find the positive integral solutions. Positive integral solutions. Or also we can put it in another way, number of ways of distributing n things between r things such that each of them gets at least 1. तो इसका एक direct answer formula है, that is n minus 1c r minus 1. So 10 chocolates distributed to r, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 10 minus 1c 4 minus 1, n is equal to 10, 10 things we are distributing, 10 balloons, and r is equal to 4 between 4 children, so n minus 1c r minus 1. So it is 9c3. बस इसे अभी सॉल्व करना है. 9 into 8 into 7 by 3 factorial is 6. So 12 into 7, 84 is our answer. Very super easy question if you have read this chapter. If you would have skipped this chapter, then there's no way we can attend this. But direct formula based question, this one is very easy, and this formula is very important. Distribution theory के 2 ही formulas हैं, and we hardly आधा घंटा लगेगा उसको समझने के लिए. Not very difficult. Definitely you should know as a prepared candidate, and if you really want to score high in the exam, these are the questions which will take you to that level, and that's where you can create the difference, because the competition is so tough. The more number of questions you can bring in your basket, that will help you score higher in the exam. Okay, so again, super easy this question if you know the formula. So I have written down the formula. यहाँ पे तुम ये formula लिख सकते हो. Number of ways of distributing n identical things between r persons such that each of them gets at least 1. This formula is n minus 1c r minus 1. Okay, just to explain you the derivation for an example, I'll say 20 chocolates. Okay, 20 chocolates, and there are 3 boys. Let us say you want to distribute 20 chocolates to 3 boys such that each of them gets at least 1. So think about the 20 chocolates. I'll take 20 chocolates like this. To distribute it into 3 boys, I'll have to divide the chocolates into 3 parts. तो उनको 3 parts में divide करने के लिए कितना dividers use करेंगे? मान लो ये एक divider है. This one divider will divide the chocolates into 2 parts.
बेसिकली पहला पार्ट में आ गया 2 एंड द रेस्ट इज 18. दैट इज वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग. वन डिवाइडर यूज किए तो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन टू पीपल. 2 18 मान लो यहाँ पे डालता तो इट वुड हैव बीन 3 17 एंड सो ऑन. बट इफ आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 3 बॉयज सो आई नीड टू यूज 2 डिवाइडर्स. बिकॉज इफ यू यूज 2 डिवाइडर्स, मान लो यहाँ पे ये सेकंड डिवाइडर डाला तो 2 1 एंड 17, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2 1 एंड 17. तुम और एक वे में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. सपोज यू वांट 18 1 एंड 1 होना चाहिए. लेट मी यूज अनदर कलर टू एक्सप्लेन. 18 1 and 1. First child gets 18, second child gets 1, third gets 1. So basically the number of ways I can put the dividers, that many ways to distribute. Now how many places I have for the dividers? Between 20 chocolates, I have 19 places for the divider. तो 19 में से कोई भी 2 प्लेस चूज कर लो. बिकॉज देर आर 2 डिवाइडर्स, यू नीड 2 प्लेसेस आउट ऑफ द 19 प्लेसेस. So 19C2, which I can put it as 20 minus 1C, 3 minus 1, or basically n minus 1C, r minus 1. That is where this formula has been derived from. तो ये डेरिवेशन मैंने तुम्हारा एक्सप्लेनेशन के लिए समझाया. When we'll read modern maths, so we'll understand this in detail. But this is a very important formula to know and काफी सिंपल है. उसी से ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया. And it is saying no child gets an odd number. That means everyone gets an even number. That is why I assumed it as 2A, 2B, 2C and 2D. And then the question is super easy. Okay, again a must solve question in the exam. Let us go to the third part. Allegation बहुत हम देख रही हैं अभी लास्ट 3-4 साल में. Repeatedly the questions are being asked from allegation. And ये एक एकदम सा standard question on allegation. Okay, I'll do a detailed video on allegation so that you can understand this better. Because this is previous year paper discussion, I'm not getting very deep into the concepts because वैसे एक ही वीडियो में बहुत सारे concepts हो जाएंगे in that case. So this is a video explanation of CAT papers. तो आगे जाके तुम इसको और भी रेफर कर सकते हो when तुम्हारा फाइनल रिवीजन चल रहा होगा. And initially you can watch this video to get an idea, okay, what the exam is all about. जो 2023 aspirants हो, you can watch this video and get an idea, okay, these all things I'm going to read. So I'll have a vision and plan going forward. Okay, ये important है, तब सर ने बोला था या मैम ने बोला था. Any video that you would have watched, एक माइंड में एक स्ट्रैटेजी क्रिएट होगा या प्लान क्रिएट होगा. ओके, आई नीड टू वॉच दीज वीडियोज और आई नीड टू कवर दीज लेसन्स, प्रैक्टिस फ्रॉम दीज एरियाज बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. दैट आइडिया एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट शुड बी देयर व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन. तो दोनों वेज में इट विल हेल्प यू इन द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन. तो यहाँ पे क्या दिया, देयर इज अ मिक्सचर व्हिच कंटेन्स लेमन जूस एंड शुगर सिरप. तो देयर इज अ मिक्सचर, उसमें लेमन जूस एंड शुगर सिरप है इन इक्वल प्रोपोर्शन. तो ये 50% एंड 50% है, इक्वल प्रोपोर्शन. इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड, तो तुम एक न्यू मिक्सचर क्रिएट करो. कैसे? एक साइड में तुम्हारा मिक्सचर है एंड दूसरे साइड में तुम शुगर सिरप ऐड कर रहे हो. इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप इन द रेशियो 1:3, तो क्वांटिटी रेशियो इज 1:3. तो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग मिक्सचर क्वेश्चंस, इसका एक ट्रिक है. ट्रिक तो नहीं, ये बेसिकली इट्स अ वे ऑफ सॉल्विंग. कंपेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन एंटिटी ऑन बोथ साइड्स. कंपेयर द कॉन्सेंट्रेशन of any one entity on both sides. तो शुगर सिरप लेके सॉल्व करते हैं. तुम लेमन जूस लेके भी सॉल्व कर सकते हो. इफ आई एम टेकिंग शुगर सिरप, ऑन दिस साइड आई हैव ओनली शुगर सिरप, तो उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन 100%. बट इनिशियल मिक्सचर में शुगर सिरप इज 50% एंड आई हैव एडेड देम इन द रेशियो 1:3. तो एलिगेशन में बेसिकली ये इंटरचेंज हो जाता है. तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा एंड ये 3 यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज 1 पार्ट एंड दिस इज 3 पार्ट्स. सॉरी, उल्टा लिखा, my mistake. This is 3 parts and that was 1 part. Now total ये कितना हो गया? 4 parts, which is basically 50% से 100% का gap, which is 50. So 1 part I get it as 12.5
और 3 पार्ट्स आई गेट इट एज 37.5. तो 50 में अगर 37.5 ऐड करते हैं आई गेट ओवरऑल 87.5%. दैट मीन्स ओवरऑल जो मिक्सचर मेरा आया रिजल्ट में उसमें शुगर सिरप इज 87.5% and lemon juice is 12.5%. So basically if this is one part, this will be 7 parts. And final ratio of lemon to sugar is 1:7. Again a pretty direct question. Ratio of lemon to sugar in the new mixture. Alligation का एक just a standard question on alligation. Nothing to apply and nothing like new in this. Standard question. तो हमने ये क्वेश्चन को शुगर सिरप लेके सॉल्व किया. तुम इसको चाहो तो तुम लेमन जूस में भी सॉल्व कर सकते हो. जैसे मैं अगर कंपेयर करूं लेमन जूस का कॉन्सेंट्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ऑन द फर्स्ट साइड ये स्टिल 50% रहेगा क्योंकि मिक्सचर में लेमन जूस एंड शुगर इक्वली है. बट ऑन द अदर साइड वेयर आई एम एडिंग शुगर सिरप टू दिस, शुगर सिरप में तो लेमन जूस है नहीं, तो 0%. बट ये वही 4 पार्ट्स रहा एंड गैप वही 50 रहा. तो इंस्टेड ऑफ 87.5 यहाँ पे 3 पार्ट्स रिड्यूस हो जाएगा, तो दिस विल कम एज 12.5%. तो ये किसका आ गया? लेमन. तो रेस्ट विल बी sugar syrup. Anyways, you will get the same answer. A very common mistake in these kind of questions is वो concentration लिखना गड़बड़ हो जाता है. Alligation is one chapter where solving is super easy, but to decode the question, understand from the question and put the values in the correct place, that is what makes it little challenging. But very interesting topic. All of you should pay very high attention when you are reading this chapter. Alligation बहुत ही crucial topic है and यहाँ से questions आते रहते हैं. ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग एन आइडिया क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व है. वंस यू रीड एलिगेशन, अगर नहीं पढ़े होगे एलिगेशन एंड यू आर वाचिंग दिस, मे बी थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट वंस यू रीड एलिगेशन दिस विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, एकदम सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मिक्सचर्स का. देन लेट्स टेक अ लुक एट दिस. देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स x y z सच दैट यहाँ पे x y प्लस y z इज इक्वल टू 19. लेट दिस बी इक्वेशन 1 and yz plus xz is equal to 51. Let this be equation 2. तो बेसिकली मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है. मुझे पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड पूछा है. तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो ये वाई जेड कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट एक्स जेड माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 51 माइनस 19 इज 32. और आई कैन टेक एक्स कॉमन, z minus y is equal to 32. This can be written in how many ways? ये natural numbers है, so I can write it as 32 into 1. I can write it as 16 into 2. I can write it as 8 into 4. I can write it as 4 into 8. I can write it as 2 into 16 and I can write it as 1 into 32. प्रोडक्ट है 32 को कितने वेज में तुम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हो बेसिकली. ठीक है, नाउ लेट अस क्रिएट अ टेबल. क्योंकि मिनिमम पूछा है दैट क्लियरली सेज एक्स वाई जेड का कोई एक वैल्यू तो नहीं रहेगा. तो एक्स यहाँ पे जेड माइनस वाई एंड उस हिसाब से वाई जेड क्या क्या होगा देखते हैं. ठीक है, तो एक्स आ गया एक कॉलम में. देन आई हैव जेड माइनस वाई विच विल गिव मी जेड कितना होगा एंड वाई कितना होगा एंड फाइनली एक्स वाई जेड कितना होगा. तो व्हेन एक्स इज 32, so z minus y is 1. So z I can take it as 2 and y as 1. I can take it as 3 and 2. But anyways ये सबसे मिनिमम तो 32 into 2 64. अब तुम बोलोगे z minus y को मैं 3 minus 2, 4 minus 3, 5, 6 minus 5 ऐसे तो बहुत ले सकते हैं. बट प्रोडक्ट का सोचो क्या हो रहा है, वो बढ़ता जाएगा. अगर तुम z को एंड y को इंक्रीज करोगे तो ये 64 से ऊपर जाएगा. मेरा ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द प्रोडक्ट. तो इस केस में 64 के नीचे तो हम आ नहीं सकते. नाउ x को जब मैं 16 ले रहा हूँ, z माइनस वाई इज 2, तो आई कैन राइट इट एज 3 माइनस 1. जितना बेयर मिनिमम है उतना ले रहा हूँ. तो x इंटू वाई इंटू जेड, 16 इंटू 3 इंटू 1 तो आ रहा है 48 और थोड़ा कम हुआ. देन x को मैं 8 लेता हूँ एंड z माइनस वाई इज 4, सो आई कैन राइट इट एज 5 माइनस 1.
8 इंटू 5 ये आ रहा है 40। देखो धीरे धीरे प्रोडक्ट कम होता जा रहा है। देन x को जब मैं लूंगा 4 एंड z माइनस वाई को 8, तो आई कैन राइट इट एज 9 माइनस 1, तो ये आ रहा है 36। एंड जब मैं x को ले रहा हूँ 2, z माइनस वाई को ले रहा हूँ 16, आई राइट इट एज 17 माइनस 1, तो आ रहा है 34। ओके 34। ये शायद वीडियो में विजिबल नहीं होगा, बट आई होप यू गेट दिस लॉजिक, किस वे में प्रोसीड कर रहे हैं। एंड x को जब तुम 1 लोगे एंड z माइनस 1 को 32, तो दिस इज लाइक 33 माइनस 1। ठीक है, बट यहाँ पे x एंड y दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो दिस इज वाई विल नॉट टेक दिस। नहीं तो 33 आ सकता था, बट बिकॉज दे आर लाइक नेचुरल नंबर्स, अलग अलग नंबर से 3 x y एंड z, so the minimum value will be 34. एंड तुम हर केस में चेक करो एक्स वाई प्लस वाई जेड 19 हो रहा है या नहीं, चेक करो। एंड और एक भी रीजन है, हम इसे रिजेक्ट कैसे करेंगे। जैसे z आ जाता है x इंटू वाई, वाई इंटू जेड करोगे तो ये पार्ट तो रिजेक्ट हो ही गया। बट यहाँ पे एक्स वाई 2 इंटू वन प्लस 17 इंटू वन 19 आ रहा है, एंड 17 इंटू प्लस 17 इंटू वन तो 51 भी आ रहा है। तो दिस इज सेटिस्फाइंग इन ऑल केसेस। ठीक है, बाकी कोई केस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू इज 34। दिस इज हाउ यू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल इक्वेशन से क्वेश्चन है, एंड यू फैक्टराइज दिस एंड ब्रिंग इट टू अ फॉर्म जहां पे तुम्हें एक पैटर्न मिलना स्टार्ट हो। नहीं तो द इक्वेशन इज वेरी ओपन एंडेड एंड वी कैन नॉट फाइंड यूनिक सॉल्यूशंस टू दिस ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। टू फाइंड यूनिकली द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, द नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। उससे कम हुआ तो यूनिकली नहीं निकाल सकते, तो उस केस में ऑब्वियसली द क्वेश्चन विल आस्क फॉर मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है बिकॉज तुम्हें मल्टीपल वैल्यूज मिलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऑलराइट, लेट अस कम टू दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगेन फंडामेंटल क्वेश्चन, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। We have something called as discriminant in a quadratic polynomial, which is b square minus 4ac, and this is used to calculate the nature of the roots. Nature of roots. तो basically क्या होता है, अगर b square minus 4ac is greater than 0, then the roots are real and positive. Real and positive roots मिलता है। If b square minus 4ac is equal to 0, that means you will get real and equal roots. And if b square minus 4ac is less than 0, that means you will get imaginary roots or no real roots. Okay, no real roots. We can put this in the graph in a certain way. जैसे यहाँ पे मैं तीन ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। केस 1, when discriminant is positive, so the graph would look something like this. मैं यहाँ पे तीन केस लिख लेता हूँ, and discriminant is 0, case 2, and case 3, discriminant is negative. That means b square minus 4ac is less than 0. Here b square minus 4ac is greater than 0, and here b square minus 4ac is equal to 0. तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करूँ, here the graph would be like this. It will cut x-axis at two distinct points, so I'll get two distinct real roots, r1 and r2. But in this case, it will not cut, rather it will just touch x-axis. So both the roots will occur at the same point, and that is why r1 is equal to r2. But in this case, it will neither cut nor touch x-axis. एंड ये जो तीन मैं अपवर्ड यू ले रहा हूँ, अज्यूमिंग a टू बी पॉजिटिव। जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ ना, सपोज तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखोगे एफ एक्स, आई विल राइट इट एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ब्लू है, दैट इज द केस व्हेन a इज पॉजिटिव। ए मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
तीनों केसेस में ए पॉजिटिव लिया, तो ए पॉजिटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, दैट व्हेनेवर यू टेक ए एज पॉजिटिव द ग्राफ विल बी अपवर्ड यू, बट ग्राफ डाउनवर्ड भी यू भी हो सकता है, दैट इज व्हेन ए इज नेगेटिव। तो जब ए नेगेटिव आएगा तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, दिस इज व्हेन ए इज नेगेटिव, बट इसका नेचर वही सेम रहा, देखो दो रूट्स, यहाँ पे द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस, downward you, and here it will look something like this. So we'll have to focus on this case, जो थर्ड वाला केस है। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव आता है जो कि ये क्वेश्चन में दिया है, तो कैसा ग्राफ आता है, या तो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और एल्स पूरा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। टू पॉसिबिलिटीज, दैट मीन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, इधर वो पूरा पॉजिटिव होगा, नहीं तो पूरा नेगेटिव होगा, देर इज नो वे एफ एक्स विल एवर बी जीरो। ओके, तो इफ आई से एफ एक्स पॉजिटिव के लिए देखो क्या एक्स आ रहा है, हो सकता है ऑल एक्स विल सेटिस्फाई और नो एक्स विल सेटिस्फाई, ये सर नो। अगर मैं पहला वाला केस लेता हूँ, यहाँ पे एंटायर एफ एक्स इज पॉजिटिव एंड आई आस्क यू द क्वेश्चन फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स इज एफ एक्स नेगेटिव, तुम क्या बोलोगे, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, क्योंकि एफ एक्स तो पूरा टाइम पॉजिटिव है। सिमिलरली सेकंड केस में मैं बोलूंगा फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स इज एफ एक्स नेगेटिव, यू विल से ऑल वैल्यूज, तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, if set S consists of all integers m such that f of m is less than 0, f of m is less than 0, तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मेरे पास दो टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, या तो पूरा ग्राफ मेरा ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है। ओके, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। तो इफ आई वांट माय एफ एम टू बी नेगेटिव, हो सकता है पूरा नेगेटिव हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, या तो अगर एफ एम जो एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज ए का साइन नहीं पता है, डू वी नो द साइन ऑफ ए, नो, तो दोनों केसेस पॉसिबल है। इफ आई एम गोइंग विथ केस 1 देन एफ ऑफ एम, मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू जब तुम एम सब्सटीट्यूट करोगे एफ एक्स नेगेटिव आना चाहिए। अगर मैं पहला केस में इवेलुएट कर रहा हूँ, एफ एक्स कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो इट्स एन एम्प्टी सेट। बट अगर मैं सेकेंड केस में देख रहा हूँ, सारे इंटीजर्स वैल्यूज में आएंगे, तो दैट इज आई विल गो विथ ऑप्शन 2, ईदर एम्प्टी सेट होगा, नहीं तो सारे इंटीजर्स हो सकते, एंड वी कैन नॉट एग्जैक्टली से ये दोनों में से कौन सा होगा, बिकॉज वी डोंट नो द साइन ऑफ ए। अ लिटिल फंडामेंटल क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक का, आई विल नॉट से वेरी इजी, बट अगर क्वाड्रेटिक का फंडामेंटल तुम्हें समझ आ रहा है, ये बस जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ भी नहीं, इट्स लाइक इन्फरिंग। एंड इनइक्वालिटीज, हम जब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं, तो इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड कंक्लूजन दैट व्हेनेवर डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, ईदर इट विल सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स और नो वैल्यूज ऑफ एक्स। तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, एवरीथिंग और नथिंग। तो या तो जो सेट है, जो इनइक्वालिटी यहाँ पे अपना क्या है, दैट एफ ऑफ एम शुड बी लेस देन 0, तो या तो ये सारे एक्स में सेटिस्फाई होगा, नहीं तो कोई भी एक्स में सेटिस्फाई नहीं होगा, दैट इज व्हाई ईदर इट इज एन एम्प्टी सेट और अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, अगेन इफ यू हैव अंडरस्टूड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज इंपॉर्टेंट अलजेब्रा में, यू शुड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आई टेक दोज क्वेश्चन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट वीडियो इन डिटेल, बट अभी इट्स जस्ट अ वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस पेपर्स, तो मैं ज्यादा डीप अभी कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ। इन अ सेपरेट सेशन आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन, क्वेश्चंस वेर इजी, अगेन ये टीएसडी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है। क्या दिया है, देयर आर ट्रेन्स ए एंड बी दैट स्टार्ट ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विथ कांस्टेंट स्पीड्स फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई। Train A reaches station Y in 10 minutes, while train B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A. Then the total time taken in minutes by train B to travel from station Y to X is. तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। बोला ट्रेन ए रीचेस स्टेशन Y in 10 minutes, तो अगर ये T1 है तो दिस T आई कैन राइट इट एज 10 minus T1, क्योंकि टोटल टाइम है 10 minutes। व्हाट इज T, ये स्टेशन X है एंड ये स्टेशन Y है, तो T एंड मान लो ये उनका मीटिंग पॉइंट Z, तो क्योंकि एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, T इज द टाइम टेकन टू लाइक मीट फ्रॉम द स्टार्ट,
मीट करने के बाद ट्रेन ए को T1 मिनट्स लग रहा है टू रीच इट्स डेस्टिनेशन एंड ट्रेन बी को T2 मिनट्स लग रहा है। यहाँ पे T2 का वैल्यू दिया है 9 मिनट्स, बट ये T का वैल्यू हमें पता नहीं है क्या है, वही निकालना है। ओके, एंड दिस इज अगेन अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। दोनों एक साथ स्टार्ट किए, एक पॉइंट पे मीट किए, मीट करने के बाद बी जो ट्रेन है उसको 9 मिनट्स लग रहा है अपना डेस्टिनेशन पहुंचने में, बट ए को कितना मिनट्स डेस्टिनेशन पहुंचने में लग रहा है वो नहीं बोल रहा है, टोटल टाइम बोल रहा है फ्रॉम द स्टार्ट। दैट मीन्स T plus T1, दैट इज 10 मिनट्स। T plus T1, so if this is T1, T will be 10 minus T1। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज दिस, आई हैव रिटन हियर फॉर योर रेफरेंस। जब PhD का सेशन आई टेक तो आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड। तुम डिस्टेंस कांस्टेंट लेके डिराइव कर सकते हो, बट दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। द टाइम टेकन टू मीट ईच अदर, T, is the square root of the product of the time taken to reach their respective destinations after they have met. So time taken to reach their respective destinations after they have met. So this is the meeting point. मीट करने के बाद ए को कितना टाइम लग रहा है एंड बी को कितना टाइम लग रहा है। ए को लग रहा है T1, बी को लग रहा है T2। तो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम टेकन टू मीट टू रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर दे हैव मेट। तो मीट करने के बाद जितना टाइम ले रहे हैं वो दोनों इंडिविजुअली, उसका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट इज द टाइम टेकन फॉर देम टू मीट ईच अदर। दैट मीन्स T इज द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ T1 T2। डायरेक्ट फॉर्मूला एंड उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। बस यहाँ पे वही सॉल्व करना है। T is square root of T1 into T2, or I can write T square is equal to T1 into T2। T की जगह लिख दो 10 minus T1 का होल स्क्वायर। इस T1 into T2 का वैल्यू हमें पता है 9, तो T1 स्क्वायर प्लस 100 minus 20 T1 is equal to 9 T1, or I can write T1 square minus 29 T1 plus 100 is equal to 0। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज ऐसा कर सकते हैं, T1 minus 25 into T1 minus 4 is equal to 0। तो T1 could be 25 or 4, but T1 4 तो नहीं हो सकता। Why not? Because total time taken, sorry 25 नहीं हो सकता T1, 4 क्या बोल रहा हूँ, T1 cannot be 25। नहीं तो फिर 10 minus 25 करेंगे, नेगेटिव नंबर आ जाए, टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो T1 25 नहीं हो सकता है। Hence I'll get T1 is equal to 4 minutes। तो T1 अगर 4 मिनट्स है, T कितना आ जाएगा, 4 into 9 का स्क्वायर रूट, 6 मिनट्स। एक बार T मिल गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय B टू ट्रैवल फ्रॉम स्टेशन Y टू स्टेशन X। तो फॉर B टू ट्रैवल फ्रॉम Y टिल X, टाइम टेकन इज T2 plus T, which is like 9 plus 6, 15 मिनट्स। डायरेक्ट देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन दिस टाइम। ओके, नॉट डिफिकल्ट। अगर तुम सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होगे, नो नीड टू बी एक्सपर्ट इन एनी चैप्टर। लाइक अगर कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहा है तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट यू शुड नो, एंड ये क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में आ जाएगा, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंड देखो आराम से आ जाएगा सोल्यूशन। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, और नो नीड टू अप्लाई योरसेल्फ टू मच। ज्यादा कुछ एप्लीकेशन है भी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है फॉर योर रेफरेंस। व्हेन विल रीड TSD आई विल डिराइव दिस फॉर्मूला, हाउ इट इज डिराइव्ड। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस एवरेज का अगेन सुपर इजी क्वेश्चन। ये सारे सातों के सातों क्वेश्चन, इफ यू हैव रेड योर चैप्टर्स प्रॉपर्ली, all questions are doable, all questions। The average of three integers is 13, so let's say my three integers are A, B and C। average A plus B plus C divided by 3 is equal to 13, ये दिया है, or I can write A plus B plus C is equal to 39। question is saying you add a natural number n, that means I'm doing this A plus B plus C plus n, एक नेचुरल नंबर ऐड कर रहे हो such that the average remains odd। ऐड करने के बाद जब एवरेज कर रहे हो, इट इज स्टिल ऑड, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज, तो जस्ट यूज ऑप्शंस यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि ऑप्शंस दे दिया है,
तो तुम सीधा सीधा ऑप्शन यूज करो, देख लो क्या आता है। सपोज आई डू a प्लस बी प्लस सी प्लस n को 3 लेता हूँ, तो इट इज लाइक 39 प्लस 3/4, 42/4 आ रहा है 10.5। ये नहीं हो सकता बिकॉज ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो 3 नहीं हो सकता। देन a प्लस बी प्लस सी, n को 4 लेते हैं, तो आई गेट 43/4, तो इट इज 10.75। ये भी नहीं हो सकता। a प्लस बी प्लस सी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो आई गेट 44/4, आ रहा है 11। ये हो सकता है। 1 ऑल्दो n का सबसे मिनिमम वैल्यू है, बट देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 करते हैं, so you are getting 40/4 which is 10. Now this is again not possible because my average should have been an odd integer, but यहाँ पे आ रहा है even। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट फ्रॉम ऑप्शंस, ऑप्शंस ऑलरेडी दे ही दिया है तुम्हें, एंड मिनिमम पूछा, जस्ट पुट द ऑप्शंस, चेक करो कि ये वाला n ऐड करके बाई 4 करेंगे तो कहाँ पे ऑड आ रहा है, बस दैट इज इट। एंड नो कंट्रोवर्सी ऑल्सो, ऐसा नहीं कि 2 नंबर में हो रहा है उसमें से भी मिनिमम निकालना है, एक ही नंबर पे सेटिस्फाई, बाकी किसी में हो ही नहीं रहा है इंटीजर, एंड एक में इंटीजर आ रहा है बट वो इवन हो रहा है, ठीक है। So these are 7 questions from the 22 questions. So I'll cover the 22 questions in 3 parts. QA का each slot I'll take it in 3 parts so that तुम्हें भी ज़्यादा heavy ना लगे when you are watching this video solutions. So you cover one part at a time, 7-8 questions at once. So easy to understand also, and easy to like reciprocate in terms of understanding, writing, revising. So these are the first 7 questions. We'll take the next 7 questions in the upcoming session, part 2. Till then, try it yourself also. एक बार खुद भी ट्राई करना, जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हो, एंड इफ यू हैवंट कवर्ड द कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट द वीडियो इज नॉट टू हरास यू और लाइक टू डिमोटिवेट यू। अगर अभी समझ नहीं पा रहे हो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इफ यू वॉच द वीडियो टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन ऑन अक्टूबर नवंबर में, you'll relate to these concepts more because by that time you would have covered all these chapters. अभी के लिए if you are watching at this point, समझ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जो जो चैप्टर्स नहीं समझ पा रहे हो, एटलीस्ट यू गॉट टू नो ओके दीज ऑल थिंग्स आई नीड टू स्टडी इन द अपकमिंग मंथ्स, ओके। तो तुम्हें एक लाइन ऑफ थॉट मिला, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोसीड, ठीक है। So that is it from my end for this session. Hope you guys enjoyed the question and understood the explanations. If you have watched it this far, do subscribe to the Aptitude Club channel. I keep posting videos regularly, and every day you'll get some content which will help you in your CAT preparation journey. It's a relatively new channel, but you will get a lot of useful insights by watching the videos. I share my journey, my thought process of QA and LRDI portion through my videos. So if you have watched this so far, do subscribe and hit the bell icon so that whenever I come up with new videos, you do get notified. A lot of people are watching the videos, but they haven't subscribed yet. So do subscribe and enjoy the videos. Till then, have a nice day, everyone. See you. Bye bye.